Assalamu alaikum dear students, this is me Syed SHAZIAH, your concerned physics teacher. Today I am going to deliver my third lecture on motion and time, and our today's topic is distance, displacement and speed. I hope all the students are healthy and they are enjoying the lectures, and also they are making best use of this lockdown time. So till now we have studied about motion and time briefly. We have discussed about slow and fast motion. We have discussed about speed, uniform speed, non-uniform speed and average speed. In the last lecture we have studied about the measurement of time. Therein we also studied about the simple pendulum. Now our today's topic is distance, displacement and speed. This is the fifth topic of your chapter, that is measuring speed. Distance and displacement. Distance and displacement are two physical quantities that may seem to mean the same thing yet have distinctly different meaning or different definition in physics. You might have learned or you might have gone through scalar and vector quantities. What are scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude. For example, mass. Mass of a body is 5 kg. It has only magnitude of 5. We don't say that mass of a body is 5 kg in north direction. ठीक है, जो mass है, it is a scalar quantity. It has only magnitude. It has no direction. So the quantities which have only magnitude उनको हम scalar quantities बोलते हैं, and the quantities which have both magnitude as well as direction are called vector quantity. For example, we say that a body travels with a velocity of 5 meter per second in north direction. That means velocity is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. So here we are going to study distance and displacement. In the same way, distance is a scalar quantity, refers to how much ground an object can cover during its motion. How much distance, how much length of ground an object travels during its motion, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका बस मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इट रेफर्स टू हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज. एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की. इट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल चेंज इन पोजिशन. हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड इन विच डायरेक्शन. इट इज़ एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल चेंज इन पोजिशन. So in order to understand the difference between or to distinct between distance and displacement, we must know their definitions of, or we must know the definitions of scalar quantity and vector quantity. As I already told you that scalar quantity are such quantities in which direction is ignored, or they don't have any effect of direction, they only have magnitude. And vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. For example, when an object changes its direction of motion, displacement takes this direction change into account. Heading the opposite direction effectively begins to cancel whatever displacement there once was. That means displacement जो होता है, this is a vector quantity. It takes into account the direction of motion, and distance ignores the direction of motion. It is only the magnitude of how much path an object covers. So to test our understanding of this distinction, consider the motion depicted in this diagram below. A physics teacher walks 4 meters east
ठीक है, 2 meters साउथ, 4 meters वेस्ट एंड फाइनली 2 meters नॉर्थ। ठीक है, एज शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, कोई भी बंदा आप लो, वो पहले क्या करता है, 4 meters ट्रेवल करता है टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 meters टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, देन दीज 4 meters टुवर्ड्स west, then finally 2 meters towards north. We have to calculate distance and displacement in this case. देखो, even though the physics teacher has walked a total distance, कितनी इसने कवर की, डिस्टेंस हम बोलेंगे total path length, that is 4 plus 2, that is 4 plus 2 plus 4 plus 2, that is equal to 12 meters. That means इस बंदे ने 12 meters की distance cover की, but her displacement is 0 meters. How can we say that? During the course of her motion, she has covered a distance of 12 meters of ground. ठीक है, yet when she is finished walking, she is not out of the place, that is there is no displacement from her motion. जहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की थी, उसने वो वही आके फिर से पहुँच गई। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये 4 meters और ये 4 meters, ये कहाँ की ओर है, ईस्ट की ओर, और ये कहाँ की, ये ईस्ट की ओर है और ये वेस्ट की ओर है। ये दो डिस्टेंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये साउथ की ओर है और ये डिस्टेंस कहाँ की ओर है, नॉर्थ की ओर। दैट मीन्स दीज टू डिस्टेंसेस विल कैंसिल ईच अदर। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें हम डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं। ये हम लिखेंगे, ये फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ईस्ट जो इसने डिस्टेंस कवर की, ये हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसने वेस्ट की ओर, दैट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन -4। ठीक है, ये हम लेंगे +2 साउथ डायरेक्शन में और -2 कहाँ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, द 4 meters जैसे मैंने आपको बताया, 4 meters टुवर्ड्स ईस्ट कैंसल्स द 4 meters टुवर्ड्स वेस्ट एंड 4 meters टुवर्ड्स साउथ। साउथ जो है इट कैंसल्स द 2 meters टुवर्ड्स द नॉर्थ, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 0. So we have learned that difference between distance and displacement. In case of distance, we ignored the direction of motion, we calculated the actual path length covered during the motion, and in case of displacement, we took into account the direction of motion. Now consider another example, the diagram shown below. यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, इसमें आपको देखना है। ठीक है, शोन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ ए क्रॉस कंट्री स्कायर एट वेरियस टाइम्स। ठीक है, एट ईच ऑफ द इंडिकेटेड टाइम्स द स्कायर टर्न्स अराउंड द रिवर्स अराउंड एंड रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। इन अदर वर्ड्स द स्कायर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है। ठीक है, इसमें एक बंदा पहले ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस डायग्राम को यूज़ करके हमें रिजल्टिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, दिस इज़ टेस्ट फॉर यू। आपको इसमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। ठीक है, यू कैन टू स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज एंड do it on your rough and try it again. If you people are able to do it, then well and good. If not, comment me, I will try to solve this problem in the next lecture. अब हम देखेंगे what is speed. We have also learned this in the last lecture, that speed is distance covered by an object per unit time. How much distance an object covers in how much time, we can say that is speed, or distance covered by an object with respect to speed. ठीक है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में एस से। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जो स्पीड की जो रिलेशन होती है, एस इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर, इसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड जो है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होता है एक्चुअल में इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम।
इस रिलेशन से जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इससे तीन रिलेशंस और आती है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड. You people have to remember all these three relations, and these are very helpful in solving the numericals. We have we need also to remember that speed, SI unit of speed is meter per second, SI unit of time is second, and that of distance is meter. This was all for today. Thank you. Have a fruitful video.